Question number 5 is a problem in statistics given to 3 students A, B, and C. Their chance of solving the problem is 1/3, 1/4, 1/5 respectively. If all of them try independently, what is the probability that problem is solved? Problem is not solved. Exactly 2 students solve the problem. As I have mentioned it earlier, problem in statistics is given to 3 students ABC and their chance of solving the problem is given. So sum number 5, probability that A can solve the problem, probability that B can solve the problem, and probability that C can solve the problem is given. 1/3, 1/4, 1/5. The first thing that we should know here is identify whether the events are independent or they are dependent. अब 3 अलग-अलग स्टूडेंट को प्रॉब्लम दिया है, वो सॉल्व करेंगे, तो ये इंडिपेंडेंट है कि डिपेंडेंट है? पहला बच्चा सॉल्व करेगा तो ही बाकी के 2 करेंगे या अपने आप करेंगे वो लोग? प्रोवाइडेड दे डोंट कॉपी, हम लोग तो ऐसे ही पकड़ के चलते. वी विल अज्यूम ऑल ऑनेस्ट एंड sincere people here. So A सॉल्व करे, B सॉल्व करे, C सॉल्व करे, ये इंडिपेंडेंट इवेंट है. अब उसमें फर्स्ट केस क्या है? The problem is solved. Now first case is the problem is solved. प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगा? जब तीनों में से कोई एक प्रॉब्लम सॉल्व करे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि हमको ये नहीं चाहिए कि 3 में से कौन सॉल्व कर रहा है, हमको ये चाहिए कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाना चाहिए. The problem is solved means at least one of the 3 should solve the problem. Should solve the problem. That is, I want probability A union, B union, C. At least one of the 3 should solve the problem. अब A union, B union, C का फॉर्मूला है P of A plus P of B plus P of C minus P of A intersection B minus P of B intersection C minus P of A intersection C plus P of A intersection B intersection C. अब एक तो इतना बड़ा निकालो, उसमें तुम लोग बोलोगे A इंटरसेक्शन B निकालना कैसे है? It is P of A into P of B. कारण इंडिपेंडेंट इव्हेंट्स आहेत ना, दोन्ही सायमल्टेनियसली झाले पाहिजे. म्हणजे काय? दोघांची मल्टीप्लिकेशन. A should also happen, B should also happen, तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को. वैसे ही P of B इंटरसेक्शन C कैसे होगा? P of B into P of C. वैसे ही P of A इंटरसेक्शन C कैसे होगा? P of A into P of C, right? And P of A intersection B intersection C कैसे होगा? P of A into P of B into P of C, right? Yes? Getting this? तो हम लोग ये वैल्यूज डाल के इसको निकाल सकते हैं. तो हम लोग डालेंगे 1/3 plus 1/4 plus 1/5 minus 1/3 into 1/4 minus 1/3 into 1/5 minus 1/4 into 1/5 plus 1/3 into 1/4 into 1/5. Yes, solve this. So what is the problem here? The calculations are too big. Okay, and it may take too long to do this. Is there an alternative method? Yes, there is an alternative method.
We want probability of A union B union C. Okay. This is equal to none of them solve the problem, उसका complement. उन्होंने क्या बोला है? Problem is solved. Okay, what do we mean by this? Problem is solved. At least one of them solve the problem. Problem is solved. कब problem solve होगा? When at least one of A, B and C solves the problem. बराबर है? Now we want that the problem should not be solved. इसका उल्टा क्या हो गया? Problem is not solved. When the problem is not solved, when none of them solves the problem. So we will say, let the problem is not solved. That is, neither A, B, nor C solves the problem. ना A प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, ना B ना C. मीन्स व्हाट? P ऑफ ना A प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, ना B प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, ना C प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है. तो प्रॉब्लम तो सॉल्व होगा ही नहीं. Now what is this? This is nothing but probability of A union B union C का ब्रैकेट कॉम्प्लीमेंट. बराबर है? अब ना A प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, ना B प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, ना C प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है. ये कैसे निकालेंगे आप? This is P of A complement into P of B complement into P of C complement. ना A प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, ना B कर रहा है, ना C कर रहा है. Now A solves the problem in 1/3 ways. So in how many ways he will not solve the problem? 2/3. B solves the problem in 1/4 ways. So in how many ways he does not solve a problem? C solves the problem in 1/5. So this is 4/5. 4 cancel, 3 cancel. Your answer is 2/5. 2/5 is the case that the problem is not solved at all. तो इसका हम लोग कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे. 1 minus 2/5. 3/5 is the case that a problem is solved. Is this easy? Easier than this method? Yes, it's a complement method. जो बोला है उसके अपोजिट की प्रोबेबिलिटी ढूंढ के निकालनी है और उसको 1 से माइनस कर देना है. चलो नेक्स्ट 5 सा A होता the problem is solved. We have found out the probability that the problem is solved. Okay, 5B is the problem is not solved. Problem is not solved. तो उसकी भी probability हम लोगों ने निकाल ली है. Problem is not solved means A has not solved the problem, B has not solved the problem, C has not solved the problem. It is P of A complement into P of B complement into P of C complement. That is 1/4 का complement क्या होता? हाँ, तो वो पहले A में किया ना, तो मैं B वापस करके बता रही हूँ. कर सकते तुम लोग, उल्टा कर सकते. 1/3 is 2/3 complement. 3/4 4/5. So it is 2/5. Then the C case. Exactly 2 students solve the problem. This is very interesting. Exactly 2 solve the problem. It means A and B should solve and C should not, or A should not solve and B and C should, or A and C should solve and B should not solve the problem. So probability A intersection B intersection C complement, or probability A complement intersection B intersection C, or probability A intersection C intersection B complement. तो A है 1/3, B है 1/4 into C complement. C complement is 4/5 plus
2/3 into 1/4 into 1/5 plus 1/3 into 1/4 into 1/5 into 3/4. Yes, find out. The denominator is common, 60, I guess. And here it is 4 plus 2 plus 3. 4 plus 2 plus 3. That is 9/60, is it? डिनोमिनेटर तो तीनों का कॉमन है ना. 9/60 को आप डिवाइड कर लोगे तो आपको मिलेगा 3/20. दिस इज योर प्रोबेबिलिटी. Done. Question number 5. 5B, 5C. Now let us go to the next question, that is question number 6. Probability that a 50-year-old man will be alive till age of 60 is 0.83. And the probability that a 45-year-old woman will be alive till 55 is 0.97. What is the probability that a man whose age is 50 and his wife whose age is 45 will both be alive for next 10 years? जो 50 साल का आदमी है वो 60 साल तक जिएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.83 है जीने की प्रोबेबिलिटी. तो मरने की प्रोबेबिलिटी इसकी 1 माइनस होगी 0.17. 45 ईयर की जो वुमन है वो 55 ईयर तक जिंदा रहे, मतलब और 10 साल, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0.97 है. तो मरने की प्रोबेबिलिटी 0.03 है. What is the probability that a man whose age is 50 and the wife whose age is 45 will both be alive for next 10 years? अब अगले 10 साल ये मियाँ बीबी जिंदा रहे. मियाँ बीबी अगले 10 साल तक जिंदा रहने चाहिए. दोनों जिंदा रहने चाहिए या दोनों में से कोई एक जिंदा रहना चाहिए? दोनों. एंड बोला है तो दोनों. ओके, अच्छा. अब एक बात बताओ. I will say that let A be the event that man is alive for next 10 years and B be the event that woman is alive for next 10 years. अब A और B ये इंडिपेंडेंट है, डिपेंडेंट है? अगर हस्बैंड मर गया तो वाइफ अपने आप मर जाएगी. अगर वाइफ मर गई तो हस्बैंड मर जाएगा? नहीं. सो व्हाट इज दिस? इंडिपेंडेंट. ओके, अब हमको चाहिए कि दोनों के दोनों जिंदा रहे. सो आई वांट ए इंटरसेक्शन बी. मींस व्हाट? हस्बैंड भी जिंदा रहे और वाइफ भी जिंदा रहे. 0.83 into 0.97. तो आपकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 0.8051. 12th में प्रोबेबिलिटी का चैप्टर है और इसके आगे का पार्ट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, which is more easy compared to the raw probability. This I called a basic or a raw probability. How to find probability. ये आपको 11th में सिखाया जाता है, जो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है. लेकिन 12th में आपको जो प्रोबेबिलिटी है उसको यूज कैसे करना है ये सिखाया जाता है. काफी इजी है और फाउंडेशन का जो सिलेबस है उससे काफी रिलेटेड है 12th. ये भी in fact you take 11th syllabus as a foundation for foundation also. Example 7. In an examination 30% of students have failed in subject 1, 20% have failed in subject 2 and 10% have failed both in 1 and 2. अब जब भी यूनियन या इंटरसेक्शन में से कुछ एक दे देते हैं तो वो इंडिपेंडेंट होता है, सॉरी डिपेंडेंट बन जाता है. तो फॉर्मूला डिपेंडेंसी का लगाना है वहां पे. ओके, a student is selected at random. What is the probability that the student has failed in A1
If it is known that he failed in 2, this is conditional. Let us do this. I will say let A be the event that student failed in subject 1. B be the event that student failed in subject 2. So what is P of A? 30%, that is 0.3. What is P of B? 20%, that is 0.2. What is A intersection B? 10%, that is 0.1. Yes. A student is selected at random. What is the probability that the student the first case that they are talking about, आपने एक स्टूडेंट को रैंडमली सिलेक्ट किया, आपको प्रोबेबिलिटी चाहिए कि वो फर्स्ट सब्जेक्ट में फेल हो चुका है, जबकि आपको ऑलरेडी पता है कि वो सेकंड सब्जेक्ट में फेल है. So we actually want to find out the probability of A by B. We want to find the probability of A by B. What do you mean by this? You know that the student has failed in B. You want to find out that they have failed in A also. Formula is P of A intersection B upon P of B. 0.1 upon 0.2. Your answer is 1 by 2. That is 0.5. आता ते 1 by 2 0.5 फारच इझी आहे म्हणून मी लगेच काढलं. असं काही कंपल्सरी नाही की तुम्ही ते काढाच डेसिमल मध्ये. Okay, let us take the second case. Has failed in at least one subject. एग्जाम के आसपास कोई फेल के बारे में बात करे मुझे भी बुरा लगता है, लेकिन they say that they failed in at least one subject. At least one subject का मतलब क्या? Union. So we want to find out P of A union B. It means failed in at least one subject. So P of A union B is P of A plus P of B minus P of A intersection B. 0.3 plus 0.2 minus 0.1. 0.5 minus 0.1, your answer is 0.4. At least one subject का मतलब क्या है? दोनों में से कम एक तो सब्जेक्ट में फेल हो जाने दो. एक तो ए में तो फेल हो गया या बी में तो हो गया या दोनों में होंगे. Getting third case. Has failed in exactly one subject. एक या और किसी एक में ही फेल हुआ है, मतलब एक तो सिर्फ ए में फेल हुआ है और बी में नहीं, या फिर सिर्फ बी में फेल हुआ है और ए में नहीं. कैसे निकालेंगे ये? P of A minus P of A intersection B. Failed only in A. 0.3 minus 0.1, 0.2 is failed, probability that failed only in A. P of B minus P of A intersection B. 0.2 minus 0.1 is 0.1. This is failed only in B. आप इनको ऐड करो, आपका आंसर क्या है? 0.3. आइदर वो सिर्फ ए में पास हुआ है या फिर वो सिर्फ बी में पास हुआ है. दिस इज पासिंग एग्जैक्टली इन वन सब्जेक्ट. आइदर और है तो मैंने ऐड कर दिया. यस, नो, मे बी.
Can we take the next sum now? Question number 8. Yes. One shot is fired from each of the 3 guns, A, B, and C. Denote the events that the target is hit by first, second, and third gun. Assume that A, B, and C are independent. P of A is 0.5, B is 0.6, and C is 0.8. Find the probability that at least one hit is registered. They have already given you the probability. Question number 8. P of A is already given, P of B is already given, P of C is already given. This is nothing but the probability that if a gun is fired, first gun is fired, then it hits the target. Second gun is fired and it hits the target. Third gun is fired and it hits the target, right? Okay. Now next. Then find the probability that at least one hit is registered. मतलब तीनों गन जब हम लोग फायर करते हैं तो कम से कम एक हिट तो बराबर बैठता है, निशानी पे बैठता है, एटलीस्ट एक. मतलब क्या एक बैठा है, मतलब सिर्फ ए बैठा या बी बैठा या सी, या ए बी और सी नहीं, या ए सी और बी नहीं, या बी सी और ए नहीं, या तीनों के तीनों बैठ गए. गेट इट? तो हमको वापस क्या निकालना पड़ेगा? एटलीस्ट वन हिट इज रजिस्टर्ड, दैट इज ए यूनियन बी यूनियन सी, दैट इज पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी प्लस पी ऑफ सी minus P of A intersection B minus P of A intersection C minus P of B intersection C plus P of A intersection B intersection C. Yes. Either I can do it like this, or again we will use the complement method. We will say that no shot is registered. That is, not even A is registered, not even B is registered, not even C is registered. That is P of A complement into P of B complement into P of C complement. That is 0.5 into 0.4 into 0.2. Complement है ना? So 0.04 is the case that it is not registered at all. So what is the probability that it is registered? That is 1 minus 0.04, that is 0.96. At least one बोला है तो हम लोग क्या बोलेंगे? None और उसका complement. Is that okay? Let us take the next sum. A bag contains 10 white balls, 15 black balls, 2 balls are drawn in succession. Succession का मतलब है एक के बाद एक 2 बॉल ड्रॉ कर रहे हैं विदाउट रिप्लेसमेंट. विदाउट रिप्लेसमेंट मतलब एक बार जो बॉल ड्रॉ किया वो बाहर हो गया, वो वापस बैग में नहीं डालेंगे. What is the probability that first is white and second is black? One is white and the other is black. Let us take the 9 sum. Okay. पहले तो बैग में बॉल है कितने वो देखते हैं. 10 white, 15 black. एक के बाद एक हम लोग 2 बॉल ड्रॉ करेंगे. पहले हम लोग 25 बॉल में से एक बॉल ड्रॉ करेंगे 25 वेज में. फिर हम लोग रिमेनिंग 24 बॉल में से एक बॉल ड्रॉ करेंगे 24 वेज में. Yes. So if I multiply them 25 into 24, total number of ways in which I can do this is 600. Now first case is, first is white and second is a black ball. पहला बॉल जो आप ड्रॉ कर रहे हो वो व्हाइट बॉल होना चाहिए. अब यहाँ पे ना इसका ज्यादा इंपॉर्टेंस रहेगा नहीं.
क्योंकि हम लोग बॉल ड्रॉ कर रहे हैं और बाजू में रखते हैं। तो पहला बॉल जब हम लोग ड्रॉ करते हैं तो बैग में कॉन्स्टिट्यूएंट्स कैसे होते हैं, 10 व्हाइट 15 ब्लैक, टोटल 25 बॉल में से एक बॉल ड्रॉ करना है। दूसरा बॉल जब हम लोग ड्रॉ करते हैं तो टोटल 24 बॉल में से एक बॉल ड्रॉ करना है, डिपेंडिंग अपॉन आपने पहले कौन सा बॉल ड्रॉ किया है उस पे। तो अब उन्होंने बोला है कि द प्रोबेबिलिटी हमको क्या चाहिए, फर्स्ट व्हाइट बॉल होगा और सेकंड होगा ब्लैक बॉल। फर्स्ट व्हाइट बॉल कैसे ड्रॉ करेंगे हम लोग, 10c1 अपॉन 25c1, क्योंकि टोटल बॉल 25 है, तो इट इज 10/25 और इट इज 2/5. Now I will draw the second ball. Second ball has to be black. तो ये पहला व्हाइट बॉल निकालने के बाद फिर बैग में कैसे बॉल्स है, 9 व्हाइट है और 15 है ब्लैक। अब मैं ब्लैक बॉल कैसे निकालूंगी, 15c1 अपॉन 24c1, that is 15/24, that is 5/8. Now they have said that I have to draw 2 balls one after the other. That is, I have to draw this white ball and I have to draw this black ball. So what should I do? Multiply or add? Multiply. 2/5 into 5/8. Your answer is 2/8. That is 1/4. Getting this? Then the next case. Next case is one white and other should be black. मतलब उन्होंने ऐसा नहीं बोला है कि पहला व्हाइट और दूसरा ब्लैक होना चाहिए, एक व्हाइट होना चाहिए एक ब्लैक होना चाहिए। ओके, सेकेंड केस को ठीक से अगर आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा, इट इज नॉट कंपल्सरी दैट फर्स्ट शुड बी ब्लैक एंड द सेकेंड शुड बी व्हाइट, और नॉट कंपल्सरी दैट फर्स्ट शुड बी व्हाइट एंड सेकेंड शुड बी ब्लैक। व्हाट इज रिक्वायर्ड, एक व्हाइट बॉल होना चाहिए एक ब्लैक बॉल होना चाहिए। तो मैं ऐसा कर सकती हूँ, पहले व्हाइट निकालूं और फिर ब्लैक निकालूं। ये तो हम लोगों ने अभी अभी निकाल लिया 1/4 में। ओके, 10/25 that is 2/5 and 15/24 that is 5/8 and that is 1/4। ये हम लोगों ने अभी निकाल लिया। One is black, other is white. Second is, or otherwise I may have first black and second white. That will be 15/25 upon 10/24. इनको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग। 15/25 is 3/5, 10/24 is 5/12, 3/5 into 5/12. This is also 1/4. 1/4 plus 1/4, 2/4, that is 1/2. So what is the probability? Is it? I will again repeat this. उन्होंने फर्स्ट क्लास में बोला था, फर्स्ट केस में बोला था कि पहला बॉल व्हाइट चाहिए दूसरा बॉल ब्लैक चाहिए, लेकिन सेकंड केस में उन्होंने बोला है एक बॉल व्हाइट चाहिए दूसरा बॉल ब्लैक चाहिए। तो ये हम लोग कैसे कर सकते हैं, पहला व्हाइट निकाल के फिर ब्लैक निकालो, 1/4 प्रोबेबिलिटी है उसका, या फिर पहला ब्लैक निकाल के फिर व्हाइट निकालो, उसका भी प्रोबेबिलिटी 1/4 है। 1/4 plus 1/4, 2/4, 1/2, 0.5 is your answer. Yes, no? मैंने इसको ऐड क्यों किया है ये 1/4 और 1/4, क्योंकि और है, एक तो ये वे में हो सकता है या इस वे में हो सकता है रिक्वायर्ड कंडीशन, तो वी हैव एडेड दैट। Next sum. An urn contains 4 black, 5 white and 6 red balls. 2 balls are drawn one after the other without replacement. What is the probability that at least one ball is black? एक urn मतलब क्या, एक बैग। urn में कैसे बॉल्स हैं, 4 ब्लैक 5 व्हाइट और 6 रेड बॉल्स है। आपको 2 बॉल ड्रॉ करने,
कैसे? 2 balls are drawn one after the other without replacement. आप पहला बॉल ड्रॉ करोगे, फिर आप उसको बिना रिप्लेस किए दूसरा बॉल ड्रॉ करोगे, and you want a probability that at least one ball is black. At least one ball is black. कम से कम एक ब्लैक बॉल होना चाहिए. तो मैं बोलूंगी एक तो पहला ब्लैक होना चाहिए, दूसरा व्हाइट या रेड हो चलेगा. अदरवाइज पहला ब्लैक हो, दूसरा व्हाइट या सॉरी पहला व्हाइट या रेड हो, दूसरा ब्लैक हो. ओके, तो एक तो पहले ब्लैक हो या फिर बाद में ब्लैक हो, या फिर पहले भी ब्लैक हो बाद में भी ब्लैक ही हो. तो पहला ब्लैक बॉल कैसे आएगा? 4/15. टोटल 15 बॉल्स है, उसमें से 4 ब्लैक है, 4/15 में ब्लैक बॉल आएगा. फिर दूसरा व्हाइट या रेड कैसे आएगा? 11/14. इनको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे. 4/15 पहला ब्लैक बॉल ड्रॉ ही करना है, और फिर हमको अदर बॉल्स भी ड्रॉ करने. ये हो जाएगा 44/15. 15 into 14, 210. दिस इज वन केस. सेकेंड केस, पहला रेड या व्हाइट हो, 11/15 हो, और फिर दूसरा ब्लैक हो, 4/14. 11/15 into 4/14, that is 44/210. Yes. Now the last one, both should be black. 4/15, 3/14. So is it 12/210? एक तो पहला बॉल ब्लैक है और दूसरा नहीं, या फिर पहला नहीं और दूसरा ब्लैक है, या दोनों के दोनों ब्लैक है, या इधर और है. तो ये कंडीशन को हमको ऐड करना पड़ेगा. That is 44/210 plus 44/210 plus 12/210. Yes, find out. 88 plus 290, 100. 100/210 or 10/21 is your answer. जितना पॉसिबल है उतना उसको सिंपल फॉर्म में लाके रख देना. सॉरी, डन. नेक्स्ट सम. Two balls are drawn from an urn containing 5 green, 3 blue and 7 yellow ball, 1/1. विदाउट रिप्लेसमेंट. मतलब विदाउट रिप्लेसमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट है पार्ट कि अगर आपके पास 15 बॉल है और आप विदाउट रिप्लेसमेंट एक के बाद एक 2 निकाल रहे हो, तो पहला बॉल निकालते वक्त आपके पास 15 बॉल्स थे, दूसरा निकालते वक्त आपके पास 14 बॉल्स थे. लेकिन अगर यही विदाउट रिप्लेसमेंट होता, सॉरी विथ रिप्लेसमेंट होता, तो दोनों भी टाइम पे आपके पास 15-15 ही बॉल्स होते. Now what is the probability that one ball, at least one ball is blue? I think हम लोगों ने अभी किया वैसे ही है. Can you do 11th for your homework? Mark it and do it for homework. Let's go with 12. A bag contains 4 blue, 5 green ball. Another bag contains 3 blue, 7 green ball. If one ball is drawn at random from each bag, what is the probability that 2 balls are of same color? Very interesting. सम नंबर 12 11th वाला आपको होमवर्क के लिए दे दिया है. 12th सम के हिसाब से आपके पास 2 बैग्स है. 2 बैग में अलग अलग बॉल्स है, 4 ब्लू 5 ग्रीन एंड 3 ब्लू 7 ग्रीन बॉल्स. अभी रैंडम एक्सपेरिमेंट को समझ लो. दोनों बैग में से एक एक बॉल निकाल रहे हैं. मैं बोलूंगी लेट ए बी द इवेंट के बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम फर्स्ट बैग, and B be the event that ball is drawn from second bag. अब उसमें उनको क्या चाहिए? प्रोबेबिलिटी.
If one ball is drawn from each bag, what is the probability that two balls are of same color? मतलब दोनों बैग में से निकाले हुए बॉल जो है वो सेम कलर के, मतलब एक तो दोनों ब्लू ब्लू हो या फिर दोनों ग्रीन ग्रीन हो. तो पहले बैग में से ब्लू बॉल कैसे निकालेंगे आप? 4/9. दूसरे बैग में से ब्लू बॉल 3/10. टोटल इज 12/90. Yes. Green, green. 5/9. 7/10. Total is 35/90. Either दोनों ब्लू हो या दोनों ग्रीन हो तो हम लोग इसे ऐड करेंगे. 12/90 plus 35/90. Your answer is 47/. Yes. अब इसको लिखना कैसे वो बताती हूँ. Write down. Let A be the probability that a ball is drawn from first bag. नहीं, हम लोग थोड़ा चेंज कर देते हैं. उन्होंने केस क्या बोला है आपको? सेम कलर बॉल एंड डिफरेंट कलर बॉल, राइट? हम लोग बोलेंगे लेट ए बी द प्रोबेबिलिटी, ए बी द इवेंट दैट blue ball is drawn and B from both bags, and B be the event that green ball is drawn from both bags. Okay, this will make it easy. Now write down. The balls drawn should be of same color. That is, either both balls should be blue Blue ball can be drawn from both the bags. Blue ball can be drawn from both the bags. In 4/9 into 3/10, that is 12/90. 4/9 into 3/10 is equals to 12/90. Green ball can be drawn from both the bags. In 5/9 into 7/10 is equals to 35/90. And now you will add it. And what statement will be given for addition? Even if you don't give it is okay, क्योंकि वो पहले ही explain कर दिया है. आप बस add करके उसको दिखा दो. Total probability is 47/90. Last sum of probability 13. Two cards are drawn one after another from a pack of 52 cards with replacement.
What is the probability that both the cards drawn are face cards? आप एक के बाद एक 2 कार्ड्स ड्रॉ कर रहे हो 52 कार्ड्स में से, वो भी विथ रिप्लेसमेंट, मतलब आपने जो कार्ड निकाला वो वापस 52 कार्ड्स में आप डाल देते हो और फिर आप वापस दूसरा कार्ड ड्रॉ करते हो। मतलब पहला कार्ड निकालते वक्त भी आपके पास टोटल 52 कार्ड्स थे और अभी दूसरा कार्ड निकालते वक्त भी आपके पास 52 कार्ड्स थे। तो विथ रिप्लेसमेंट में हम लोग 2 बार एक ही कार्ड ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, तो you want probability that both the cards drawn are face cards. 13 sum. So 52 cards are drawn. I will say that let A be the event. The first card is face card. B be the event. The second card is face card. Okay. Let A be the event, the first card is face card. Let B be the event, the second card is face card. Now in how many ways I can do A? 12C1 upon 52C1 can I? क्योंकि टोटल 12 फेस कार्ड्स होते हैं, उसमें से एक कार्ड ड्रॉ किया 12/52. P of B. C1 upon 52C1. Okay, first card is drawn is the event A. Second card is drawn as event B. हमारे पास फेस कार्ड ड्रॉ करना है, वो भी विथ रिप्लेसमेंट। तो मैं पहला फेस कार्ड ड्रॉ करूं, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 12/52. सेकेंड फेस कार्ड ड्रॉ करूं, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 12/52. अच्छा, क्योंकि ये विथ रिप्लेसमेंट ड्रॉ करना है तो मैं फर्स्ट कार्ड भी ड्रॉ कर रही हूँ और मैं सेकेंड कार्ड भी ड्रॉ कर रही हूँ, तो मैं क्या करूंगी? 12/52 इंटू 12/52, दैट इज 144/52 का स्क्वायर क्या है? अच्छा, अगर हम लोग इसको पहले ही डिवाइड करेंगे तो भी ये आसानी हो जाएगा। तो ये 12/52 को कैसे लिखेंगे आप? 6/26 into 6/26, that is nothing but 3/13 into 3/13. Yes, so it is 9/169. This is your answer. ये विथ रिप्लेसमेंट, हाँ, तो विथ रिप्लेसमेंट में वही कार्ड दोबारा निकाला जाए इसकी प्रोबेबिलिटी होती है। विदाउट रिप्लेसमेंट में वो प्रोबेबिलिटी नहीं है। आर वी गेटिंग दिस? श्योर? ओके।